हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों का? व्हाट अ प्लेजर टू सी यू ऑल अगेन। मैं तो वेट करता हूँ सुबह की कि आई विल पिक अप द 3 न्यूज़पेपर्स, गो थ्रू देम एंड देन मार्क व्हाट आई हैव टू टीच, मेक अप माई माइंड कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। रीड योर कमेंट्स ऑन द लास्ट लास्ट वीडियो। कल की वीडियो पे काफी कमेंट्स दिए आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स। देखो, व्हेन वी डू समथिंग, वॉट एवर वी मे डू, इफ यू गेट अ फीडबैक, सी वन इज यू हैव हर्ड, यू मेड नोट्स एंड गायब हो गए। सेकेंड इज when you reply back, when you write on YouTube or you write on Telegram or you write on Instagram कि सर सेशन बहुत अच्छा था, we understood this topic, why don't you cover this topic? So this then it becomes a two-way communication, and two-way communication में मजा बहुत आता है, because finally I am a mentor, finally मैं रहबर हूँ, गाइड हूँ, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा गुरु हूँ, है ना? तो अगर फीडबैक मिलेगा तो then that much more effort I will enjoy putting into this, ठीक है? सो जय हिंद। काफी लोग तो पहले ही, अर्पिता वाज द फर्स्ट, अर्पिता सिंह, रोहित, सूर्या, मलिक, धार्मिक, विराट, प्रवीण कुंभार, रणवीर यादव, हिमांशु, दीक्षा, अभिषेक दयानी, विराट त्यागी। सर चेंज टाइम ऑफ दिस, हाँ ये दो लोगों ने लिखा है, विराट ने भी लिखा है, दीक्षा ने भी लिखा है, नहीं दीक्षा ने नहीं, शिवानी ने लिखा है। इन्होंने लिखा कि सर टाइम चेंज कर दो, बताओ फिर क्या टाइम करें। We can take a poll on our Telegram channel, कितने बजे करें, but don't ask me to do it at 7 in the morning, ठीक है? हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि सुबह बोलो सर, तो अखबार ही 7:30 7:30 बजे आता है, ठीक है? अनुराधा, आरती जाट, गुड टू सी यू बैक। सानू सिंह, मोमिता, रोहित, फन विद कार्स, सुमेद इज ऑलवेज देयर, संतोष पाटिल। अच्छा, कल आ रहा हूं मैं पटना, ठीक है? जो पटना के आसपास वाले तैयार हो जाओ, कल पहुंच रहा हूं, परसों मेरा सेशन है, बट कल भी मिल सकता हूं। हाय गौरंग मल्होत्रा, नंदिनी कुमारी, इतने अच्छे नाम आपके दिए हुए हैं, फिर आप क्यों ऐसे उल्टी सीधी आईडी बनाते हो, मुझे समझ नहीं आता है। इतने सुंदर नाम है, प्रताप, दीक्षा, रणवीर, हैं, अनूप, गुड, ऐसे नाम होने चाहिए, हैं? ठीक है, चलो तो शुरू करें आज का सेशन। हेलो प्रिया, अमन, अनिल, नरेश। और मुझे फर्स्ट नेम बहुत अच्छा लगता है लोगों का बोलना, फर्स्ट नेम, वो सबसे स्वीट साउंड जो आप सुनते हो, आपका नाम। देखो सर नेम तो आपने चुना नहीं, वो तो आपके चल रहा है फादर, ग्रैंडफादर, उनसे, ठीक है? द नेम गिवन बाय योर पेरेंट्स इज योर फर्स्ट नेम, और वो सबसे अच्छा लगता है सुनने में, कोई आपको आपके फर्स्ट नेम से बुलाए, है ना? अब अंकिता है, आशीष है, विराट है, नरेश, अनिल, प्रिया, अमन, अनूप, रणवीर, दीक्षा, नंदिनी, कितना अच्छा लग रहा है, रोहिणी, है ना? तो इतने सुंदर नाम है। चलो, नामों पे किसी और दिन चर्चा करूंगा, आज चर्चा करेंगे अखबार की, ठीक है? ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट इज, या टुडे इज 17 मार्च, आज क्या है, 17 मार्च 2023, ठीक है? ओके, सो वी विल स्टार्ट विद हिंदू with the two news items on the front page. ये है, पार्लियामेंट इज इन लॉकजाम। कल 5 मिनट और 45 सेकंड करीब काम हुआ, या 5 minutes and 45 seconds is what both the houses combined worked yesterday. Out of nowhere, the treasury benches have found this issue to attack a member of parliament of the opposition and what this has done is it has given momentum to the agitation of the opposite benches on asking for a JPC probe on the Adani Hindenburg issue. तो कहीं ना कहीं एडिटोरियल ने भी ये लिखा है कि आप इट्स अ सेल्फ गोल एंड इट इज, देखो क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ, अपोजिशन का काम है हल्ला मचाना, अपोजिशन का काम है डिसरप्ट करना, अपोजिशन का काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, मुद्दा कोई ना कहीं से ढूंढो, इवन इफ द गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फैबुलस, एंड इट इज गवर्नमेंट्स जॉब टू एंश्योर पार्लियामेंट रन्स, इट इज गवर्नमेंट जॉब। इसीलिए देयर इज अ मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पता है ना, कोई मिनिस्टर होता है, उसका काम होता है बजट सेशन से हफ्ता 10 दिन पहले ही विल गिव अ कॉल, अपोजिशन लीडर, अपोजिशन को, सारी पार्टियों को,
वो चाय पे बुला लेगा, किसी को खाने पे बुला लेगा, किसी से बात करे, चलो कोई बात नहीं, आप बताओ क्या है, अरे लेट्स रन. तो इट इज हिज जॉब. फ्लोर मैनेजमेंट इज कॉल्ड द फ्लोर मैनेजमेंट. इज कॉल्ड द फ्लोर मैनेजमेंट. देन द स्पीकर, लोकसभा स्पीकर है, एक राज्यसभा के स्पीकर इज एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये फिर खाने पे बुलाते हैं कि आ जाओ खाना, मैं अच्छा खाना खिलाऊंगा, आ जाओ मेरे पास बात करने के लिए, सेशन आने वाला है. तो ये सब डेमोक्रेसी में होता है, वहां खूब मजे होते हैं, फोटो शोटो खींचते हैं, ये होता है. लेकिन फिर जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है. तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है कि वो कह रहे हैं अडानी इशू पे जेपीसी करो, वो कह रहे हैं जो है आप अपोलोजाइज करो. कहते हैं ठीक है अपोलॉजी बाद में देखें, मेरे को सुन तो लो पहले, गिव मी टाइम, लेट मी क्लैरिफाई माय स्टैंड इन द पार्लियामेंट. सो ही गोज एंड मीट्स द स्पीकर. सो दिस इज डांस ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज गोइंग ऑन. 13 opposition parties urge election commission to conduct J&K elections. अब J&K election ना is dragging. The issue is dragging right from when the Article 370 was abrogated and J&K became a union territory. From a full-fledged state to a union territory, there have been no elections. So there is a clamoring now for कि let's have elections, and government also saying yes करेंगे. ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, करने पड़ेंगे election. So it is and asking for full statehood of J&K. See, somewhere it is this may be hurting the sentiments of the people कि आपने यार हमें हमारा दर्जा कम कर दिया, अब दिल्ली से you are running the show there. Even UT Ladakh people are not happy. ये हम लद्दाख का जब पीछे चर्चा चल रहा था, सोनम वांगचुक का एजिटेशन था, उस पर मैं 6 शेड्यूल पे बात कर चुका हूँ. So ये this is what is happening. अब जाएंगे सीधा एडिटोरियल. अभी जाएंगे सीधा, बीच के पन्ने छोड़ दिए हमने, मैंने फोल्ड ऐसे करके रखा ही है. See, anything whenever Shashi Tharoor write, it calls for reading. He is one of my favorite authors. I have some amazing books here written by him. He is, I think, one of the best current writers. And first time I heard Shashi Tharoor was in 1996. कितने साल? 1996. तकरीबन 27 साल हो गए. When he came to address us in Staff College Wellington. मैं स्टूडेंट था तब स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में. 1996 की बात है. तो शशि थरूर केम ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क. ही वर्कड इन यूएन ऑल हिज लाइफ, मिस्ड बिकमिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन बाय a very small margin. So he was in the UN, he was a diplomat in the UN. He came and addressed us on idea of India and all. तो तब से मेरे माइंड में, then I've read all his books. So here he says the colonial past is still relevant. Whether you agree or not, he's the person who has brought colonial past to the mainstream of by his books, his speeches and writing. We never criticized the British the way he criticized. We did not hold, we thought they were good colonizers. ये एक ये नैरेटिव भी चलता रहा देश में, अंग्रेज तो अच्छे थे जी, ट्रेनें दे दी, टेलीग्राफ दे दिया, उन्होंने तो ये दिया, उन्होंने ये दिया. And vilifying the उससे पहले के colonizers or invaders by saying British were good. But it is Shashi Tharoor who put everything in context कि no, the actual loot, the only loot of this country took place under the British. तो इन्होंने उस पर एक बात किया कि आजकल अभी कोई empire रही नहीं है. There are no empires now. All gone. Empires have all gone. But still, somewhere or the other, we are affected by our colonial past. So that is what he's trying to say, कि we must move ahead, but we can't ignore the colonial past. क्योंकि अभी तक पुलिस एक्ट colonial, IS civil services colonial, AFSPAR, UAPA, सारे के सारे act owe their this thing to colonial past. Then boundary dispute with Pakistan, colonial past. Boundary dispute with China, colonial past. So many of these things are there. So he says that colonialism cannot be forgotten factor in understanding the problems and dangers of today's world. So when you understand how the today's world is taking place, you will have to go back to that. So that is interesting. Pad lena, time mile to. Then is testing times. February sharp foreign trade drop requires nuanced policy attention. This is on when I told you our exports have fallen. एक कल की हेडलाइन थी, हिंदू कवर कर रहा है इसको, बाकी पेपर हाशिए में है या इकोनॉमिक पेज पे. हिंदू ने कल भी हेडलाइन न्यूज दी थी, एक्सपोर्ट्स फॉल बाय 8.8%. So they say sharp trade, foreign trade sharp must require policy attention ki dekh. Then we have dangerous moves. This is the US should find stability in ties with Russia to help end the Ukraine war. See,
belligerence will not solve any problem. If you keep needling Russia, if USA keeps, now the latest is that drone which a MiG aircraft, Russian aircraft is attacked, जिसकी footage available है, कमाल की footage, that the aircraft drops oil, aviation fuel on the drone and then hits the rotor also. But as you see the US technology, that means they were seeing it live. They were seeing it live when this was taking place. Kamal, I'm hats off to their technology and where they are. So the paper says, the editor says that US should look for mending ties with Russia. See, these are two big powers. Now China is also coming. So इनका role है as big powers to talk to each other and ensure the world is a stable place. It's their role to ensure. So that is what they say. The Ukraine war can only end the day Biden gives a call. उठा के phone. Hi Putin, how are you? Are you free? Can we talk? The war can end. The war can end. It is that easy. If it comes to that. But who wants to end the war? We don't know. Who wants to propagate the war? We don't know. So the war is in. There's too much of haze. There's so much of perception management, information warfare. जो हम देख रहे हैं वो है नहीं reality में. जो TV channel दिखा रहे हैं वो नहीं है reality. We don't know. There's too much of Western propaganda. There's very little coming from Russia. So we don't know. So this is what the paper is saying. Now, this is a article. I don't agree with him much, but this is written by ex-IG of CRPF. Madhusudan is retired Inspector General of CRPF. He says tested but tired, this force could be in distress. He's talking of CRPF's role, कि wherever the army is withdrawing, CRPF is doing that role. So he says the force is in distress and we should take care. And he's also talking of giving them everything equivalent to the Army, Navy and Air Force. That is where sometimes I disagree because दोनों अलग cadre हैं. हमारा जवान 15 साल में रिटायर हो जाता है, कोई 20 साल में चले जाता है. अब अग्निवीर भी आ गया हमारे ऊपर, हमारे पे तो आया नहीं अग्निवीर. And the jawan in BSF CRPF serves till 60 years. 60 years. हमारा तो JSU रिटायर हो जाता है 48-49 में. A Subedar Major Honorary Captain is home in 48-49. Here soldiers serve still 60 years. So these are two different cadres. That is why even when I was in the army and लोग कहते सर IPS SIS, I said don't compare. फिर वहां चले जाना था, यहाँ क्यों आए? These are two different cadres, different systems, different rules, regulations, different pay scales. So that is what he has written, and I have given my view. अगर कभी ऐसा discussion होता है तो इन मुद्दों पे आप बात कर सकते हो. Now this is of course an educated woman likely to marry later. Though the headings is talking of this, yeah, this is a fact. More and more women get educated, they get into workforce. The moment they get into workforce, they don't want to marry. When they marry, they don't want to have children. जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा अच्छा इसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है कि बॉय के लिए हमारा है नौकरी करो, सेटल डाउन होगे तो शादी होगी. इन केस ऑफ गर्ल्स इट इज शादी इज प्राइमरी. फर्स्ट थिंग पेरेंट्स होते हैं भाई एक ही मुसीबत है मेरे पास, तो बेटी की शादी करनी. This is the perception still in bulk of our Indian households, all irrespective of religion, caste, creed, region. The daughter is to be married away and then she goes and adopts another family. And then with daughter you have dowry, है ना, दहेज, फिर कार, बंगला, ये सब है, वो सब attached, arranged marriages के अंदर, and you keep looking on. For boy, it is job, then marriage. So this is an interesting way. But society is changing. But India lives in various generations. एक एज है, एक सोसाइटी है जिसमें अपर क्लास है, वो अलग ही, वो यूएस और यूरोप से बेटर स्टैंडर्ड में रह रहे हैं, उनकी सोच वो है. फिर एक अपर मिडिल क्लास है, वो थोड़ा और वो है. लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, और वो कुछ और साल पीछे रह रहे हैं. एंड एक और तबका है जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर, दे आर लिविंग मे बी आई डोंट नो हाउ मेनी decades behind the mainstream. Yeah, this is the mid-air encounter. अगर आपने नहीं देखा, it is viral on Twitter, social media, that video clip. I saw it. This is the clip. This is the Russian jet which is dropping aviation fuel on the drone. ये ड्रोन का मार्क दिखाया हुआ है फायरिंग के लिए ये मार्क है. अगर फायर हो जाता फिर क्या होता?
फिर क्या होता है? we are not supposed to hypothesize things. जो होगा देखी जाएगी. We will cover next day in the morning. Yeah, this is the all-powerful Sri Lankan presidency. This has been an issue in Sri Lanka. In spite of president running away and people occupying his house, आपने वीडियो देखे होंगे, कोई उसके स्विमिंग पूल में कूद मार रहा है, कोई उसकी चेयर पे बैठे फोटो खिंचा, लाइन लगी हुई सेल्फी लेने के लिए, प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठे हो, कोई उसके बेडरूम में मजे ले रहे हैं, कोई उसके किचन के खाने साफ किए जा रहा है. We saw that the riots that took place in Sri Lanka. But the article says the presidency is too powerful. Presidency is too powerful, but nobody is able to do anything about it. And that is a problem of Sri Lanka. Neighborhood mein hai, island nation hai. We must, and see the palace. And when I saw the visuals, or those video, third world country presidents living in such luxury, ये भी एक सोचने की बात है ना. चलो इस पे किसी और दिन बात करूंगा. Know your English. Word of the day is jamboree. Jamboree. Word of the day is jamboree. Jamboree means lavish celebration. 12th pass, you had a jamboree session with all those who going to college now. Yeah, say gala function type. No. Okay. This is India welcomes confirmation of Eric Grassetti as US ambassador. 20 महीने लगे. It took 20 months for Joe Biden to get this ambassador to India confirmed by the Senate. ये बात मैं कई बार कह चुका हूं. यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मंत्री भी नहीं लगा सकता, एम्बेसडर तो छोड़ो. दिस द ब्यूटी ऑफ द यूएस सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ही कांट से यार मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इलेक्शन में से लड़ता है, तेरे को तू तो मिनिस्टर बनी जा, तेरे को गवर्नर लगा देते हैं, तूने बड़ा अच्छा काम. नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल. इन यूएस it has to be confirmed by the Senate, and in Senate there are multiple hearings. The person has to sit in front, answer questions. He's grilled like you get grilled for your SSB or more than that. Only then Senate may say okay, confirmed, he's fit to go. This is the US system. So finally India has a full-fledged ambassador of US. Ambassador नहीं था यहाँ. अच्छा, कमाल की बात क्या है, 40 ambassadors who are waiting to be confirmed. Saudi Arabia, another important ally of US, doesn't have an ambassador. तो ये कहीं ना कहीं pitfalls भी है, and slow system. I don't know. हमें इस पे पता होना चाहिए क्या. We can't really comment on good, bad, ugly. Now this is the sad story. This is the sad story. I thought शुरू में share करूंगा, but फिर मैंने कहा चलो बाद में बताऊंगा आपको. This is on the two pilots killed in army copter crash in Arunachal Pradesh. ये एक और अखबार ने कवर किया है कि in last 3 years how many choppers have gone down, and especially northeast. 2 young officers, Lieutenant Colonel VVP Reddy and Major A Jainath, pilot and co-pilot. They took off from a place, picked up a VIP, dropped him somewhere else, and were returning to the base when they lost contact and they crashed. So this is the Cheetah. This is aging fleet of Cheetah and Chetak helicopters. I've flown in them many times. Many times I've flown in these choppers. They've served good stead, but we don't know the reason. This is sad. This is really sad. 2 trained pilots going down. Not good for Army Aviation and Air Force. Okay. Now, COVID is slowly making appearance again. We have reports 700 cases. Maharashtra is leading. So let's wait and watch this space. I hope we don't have, coming back like we had a year back. Now, this is of course the world. Chinese Communist Party takes more control in government overall. There's no doubt. Chinese Communist Party, China is Chinese Communist Party. Okay? But Xi Jinping has got full control. He has been able to get the Prime Minister of his choice. He's got the Foreign Minister of his choice. He's got the main Politburo of his choice. Court upholds non-bailable warrants against Imran Khan. So for some time there may be, tempers cooling in Pakistan. But in long run, I don't know what the opposition is going to achieve by putting a former Prime Minister in jail for gifts that he has taken and not declared. Okay? Do they want him not to take part in election? Does the army
आर्मी इज द एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी इज द डीप स्टेट इन पाकिस्तान. ऐसी कोई चीज नहीं होती बिना जो पाकिस्तान में और बिना आर्मी की परमिशन के. सो these are the question I'm throwing to you. Does the army is the army seeing next elections without Imran Khan? आपको पता है नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं. So let's wait and watch. This is of course Netanyahu, Benjamin Netanyahu, right-wing government in Israel, and their judicial reforms, where they want to take over appointment of judges and everything in all courts. And people, middle class is up in the arms. People, citizens are up in the arms in Israel. So they have got back to the streets because they are not happy with the formula worked out. Achha, this is a very interesting development. Ties between South Korea and Japan. Both are very, very staunch allies of US. आपको पता ही है ना, दोनों जगह यूएस सोल्जर स्टेशन रहते हैं, यूएस शिप्स, यूएस एयरक्राफ्ट, ये वो. दीज आर टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट allies of US in this region, Indo-Pacific. But they don't see eye to eye, Japan and South Korea. They have a very, very troubled past, very, very traumatic past with each other. वो बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने दिया हुआ है, आगे एक दूसरे आर्टिकल में बताऊंगा, where Japan ruled South Korea. They had annexed South Korea. And a lot of South Korean women were used as comfort women for the Japanese soldiers. ये इशू 80s में, 70s, 80s में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज था, हम पढ़ते थे. फिर जापान ने अपोलॉजी करके पैसे भी दिए. These women were now old ladies, and they said we were brutalized when we were young. We were sent to the camps to be used by the Japanese soldiers. And Japanese अब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, but their war history is quite brutal. ठीक है. So South Korea, Japan are making, trying to forget the past and making, peace towards each other. आया मजा? Give me a thumbs up. चलो फटाफट मैं दूसरा अखबार उठाता हूँ, तब तक आप जो है फटाफट वो करो. आप शेयर नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ. वही लोग जो इंटरेस्टेड इन न्यूज में वही देख रहे हैं इसको. इट इज नॉट गोइंग टू पीपल. इट शुड गो with this kind of effort. A session like this should reach thousands of people. ठीक है. Okay. So this is of course now Indian Express. COVID cases up. Health Secretary writes to 6 states. Steps up tracking tests. Japan Prime Minister to outline. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जापान के जो प्राइम मिनिस्टर किशिदा, जो पहले होम मिनिस्टर होते थे एबे के टाइम पे, तो ही इज कमिंग टू इंडिया. शिंजो एबे के टाइम पे ही वाज द होम फॉरेन मिनिस्टर. तो ही इज गोइंग टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. तो ही इज कमिंग टू इंडिया and he is going to speak on open and free Indo-Pacific. So this is an important thing, and good that he is going to make this seminal talk on Indian shores in India, maybe to Indian Parliament. Let us see where he does this. अच्छा, कमाल की बात क्या, हमारे न्यूज़पेपर्स में चाइना की एड्स आती हैं. This 2 page is advertisement given by Chinese embassy. 2 पेज. कोई जिसको नहीं पता होगा पढ़ेगा, रे चाइना में ये हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है. ऊपर देखो एडवर्टाइजिंग सप्लीमेंट. ठीक है, होता है. Lot of news of the parliament, zero work. Then of course the president had given colors to INS Dronacharya. इस पे किस दिन बात करेंगे. Why are the colors given? What is the meaning of president's colors? And क्या आज को रेलिवेंस है इसका? आज के जमाने में हम बोलते हैं कॉलोनियल पास्ट हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ. व्हाट इज द रेलेवेंस टुडे ऑफ दिस प्रेसिडेंट्स कलर्स? पहले इट वाज ओनली टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. अब पुलिस भी दे रही है. अब कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स दिए गवर्नर ने आके. तो मैं हैरान हूं, वेयर विल स्टॉपिंग सर्टेन कॉलोनियल प्रैक्टिसेस, वी मे बी इनएडवर्टेंटली एनकरेजिंग. तो इस पे भी एक दिन बात करूंगा. What are president's colors? Why they are given to units? Yeah, this is 2 army pilots die in Arunachal Pradesh crash. Probe ordered. So this is sad event. बहुत दुख होता है when you see anything like this, and to the families, to the units, it is shocking. It is absolutely shocking. It's traumatic, in fact, to the unit also. When your chopper doesn't come back and you hear it has crashed, I can imagine the technicians, the CO, and all men. What happens to them when they get this news?
Okay. Now this is very interesting. Norway cares, and this is written by the ambassador of Norway to Delhi. जनरली मूवीज कवर नहीं करता हूं मैं, बट मैं हैरान हूं कि एम्बेसडर ऑफ अ कंट्री हैड टू राइट अ सेंटर पीस टू डिफेंड सर्टन पॉलिसी ऑफ देयर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ मूवी दैट इज मेड. ये पिक्चर है मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे. ये कुछ साल पहले केस हुआ था, मुझे तो अच्छे से याद है केस हुआ था. देयर वाज अ इंडियन कपल एंड पुलिस आई और बोले भाई तुम्हें बच्चा पालना नहीं आता है, और उसको बच्चा ले गए कि तुम लोगों तो कोई आइडिया नहीं है बच्चे को कैसे पालना है, कैसे दूध पिलाना है, कैसे रखना है. सो दे टुक अवे अ चाइल्ड. सो बेस्ड ऑन दैट अ मूवी हैज बीन मेड. द नेम मूवी इज मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. ठीक है. सो आई बिलीव इट्स अ गुड मूवी which shows you know one view of a family. So the ambassador has gone to say कि ऐसा नहीं है, ये पिक्चर बिल्कुल गलत है जो आप देख रहे हो. तो ये इंटरेस्टिंग है, मैं बता दूं आप लोगों को. रानी मुखर्जी है इसमें. Critique and criticism. Yeah, this is on the parliament logjam, and this is editorial of the Indian Express. He says contest Rahul's despairing speech. कि उसने जो बोला है आप उसको contest करो, get him into a debate, let's have a debate. But BJP must drop its move to suspend him from. देखो किसको suspend करो, पार्लियामेंट से निकालो, देशद्रोह का केस करो, पुलिस केस कर दो. पुलिस has already gone to his house, भाई तेरे पे केस करेंगे. It's a self goal and it is wrong. It says a self goal, it is wrong, totally wrong. This is what the paper editor is saying. Editor is saying कि self goal मत मारो अपने गोल में, और गलत भी है ये. It doesn't show our democracy in good light. So this is this. Then this is eye of the storm on Pakistan, and of course triumph of soft power. ये मैं बहुत बार टॉपिक कर चुका हूँ. Our soft power is our movies, our dance, our our cuisine, our dress, and the way India is. ठीक है. तो चिकन टिक्का is more popular in UK than in India. ठीक है. And our movies are hit all over. So उसके ऊपर है after the Oscars. And then we have a article by two young people. Both are lawyers. One is a professor in politics, another is a lawyer, on marriage less narrow. This is again continuing on the debate and the case that is there in Supreme Court on recognizing same-sex marriages. तो उसके ऊपर है. So they are also saying Special Marriage Act has ample scope to accommodate same-sex unions, and they are also arguing this कि it's high time we give them this recognition. Basically, कानून को सब recognition, उनको recognition चाहिए, so that like any other couple they can also take care of each other, and जो भी एक inheritance है, adoption है, which are duties which couples fulfill. Now this is coalition sends message to Beijing. Indian Navy joins drill in the Pacific. Indian Navy has gone to Guam. Guam is का Indo-Pacific में एक island है, Second World War में बड़ा popular था. तो वहाँ पे we have taken a aircraft also there. You can see Indian contingent with our aircraft. So anti-submarine warfare drills being staged by US, Canada, India, Japan, and South Korea. US, Canada, India, Japan, and South Korea. It's a signal to Beijing. Beijing के लिए signal है. And this is of course Japan, South Korea renew relations at Tokyo Summit. Tokyo Summit. इसके क्या issues हैं broadly मैं बता चुका हूँ, इतना ही जानना बहुत आप लोग. Chinese Foreign Minister dials Kyiv. World needs to create conditions for talk. So China ही मुझे लगता है अभी initiative ले रहा है to bring some kind of a peace in this region, with Xi Jinping visiting Vladimir Putin this week. And let's see what he says there and what he doesn't say. Both things will be noticed. And then, of course, he will also have a talk with Zelensky. So now, this is the Credit Suisse lifeline and its impact. 3 banks have collapsed, and Credit Suisse, which is a very, very big banking institution, was also clouded, but they have got $54 billion aid. So another Swiss central bank has been saved. Amid global crisis, how safe is your money? आपके पैसे कितने सेफ है बैंक में, स्टॉक्स, उसके बारे में है. But the interesting part is here. Iran-Saudi deal brokered by China. What the big gambit holds for Beijing, West Asia, and India. Nirupama Subramanian. When she writes, please ऐसा आर्टिकल यूं का यूं आप काट के अपनी डायरी में पेस्ट, अपने रजिस्टर में पेस्ट कर सकते हो, बट अंडरलाइन कर लो important aspect. So 4 months of talk and week of silence for India. एक हफ्ते इंडिया ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया. No reaction. अखबार में आ गया डील हो गई, but we were shocked. How did this happen? We didn't come to know.
and this is on Japan South Korea summit. What has kept the two apart? I told you this issue of Japan colonized Korea from 1910 to 1945. 35 साल जापान की कॉलोनी थी कोरिया. Korea was a colony, and Japanese are very very they've had Koreans forced labor, forced prostitution in military brothels. Military brothels hote the forced prostitution of. So people have not forgotten. People have not forgotten. So let's see. They gave some money in 1995 and apologized, but they say it is not enough. So let's wait. So यही वही बात होगी जो शशि थरूर ने लिखी थी. Colonial hangover, colonial past cannot be forgotten, but at the same time we should not stick to that for too long. उससे lesson learned करो और आगे चलो. Okay. So मजा आ रहा है तो give a thumbs up. फिर आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगा. बच्चा पार्टी. दीक्षा चौधरी, I've never heard about Japan Korea issues. तुमने बहुत सी चीजें नहीं सुनी होंगी till you joined my classes. ठीक है, मैं हैरान हूं क्योंकि आप लोग तो पता नहीं किस दुनिया में रहे हो. चलो रोस्टिंग बाद में करेंगे. रोस्टिंग के लिए टाइम. This is Poland to send MiG-29s to Ukraine. Finally, this is confirmed now. Poland will be sending MiG-29s. These are Russian aircrafts with Poland. Poland आपको पता है रशिया का वॉर्सा पैक्ट कंट्री का लीडिंग मेंबर होता था. पोलैंड में भी रशिया ने बहुत इंटरफियर किया यूएसएसआर में. So they are going to send. And Prachanda likely to visit India next month. So let's wait and watch. The Nepal president coming to India. It'll be a red carpet welcome. So let's see क्या बातचीत होती है उनके साथ. US took 20 months to confirm Garacity. US took 20 months. ये मैं कवर कर चुका हूँ आपके लिए. एक और चीज थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था. ये है स्टेट ऑफ हेड. हेड ऑफ स्टेट कहते हैं ना जनरली. हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट. हेड ऑफ द स्टेट इन अ स्टेट इज गवर्नर. उसके ऊपर है. ये बहुत हार्ड हिटिंग है. गवर्नर्स हैव बीन सीन एज पार्टीसन फॉर डिकेड्स. दे शुड बी अकाउंटेबल टू सेंटर, स्टेट एंड राज्यसभा. तो ये बिकॉज ऑफ दिस very very tough remarks by the Supreme Court yesterday on the day before yesterday on the hearing of the Maharashtra crisis that took place midnight, and there was a revolt and then there was what. तो उसके ऊपर है. इन्होंने लिखा है गवर्नर्स के रोल के ऊपर. He says and just see कहता है the frequency and sharpness of discord have gone up of late. अभी ज्यादा हो गया. Earlier this month Supreme Court hearing Punjab Chief Minister versus Governor said levels of discourse should not degenerate into race to the bottom. मतलब कोर्ट कह रहा है कि आप तो बिल्कुल धरातल में चले गए हो. That is a discourse between governor and chief minister. Tamil Nadu, Kerala, Rajasthan, Telangana, Chhattisgarh, Bengal have all protested governors using their office in a manner that's seen as slowing down or meddling in state government function. कितने state? And सारे opposition ruled है. सारे opposition ruled states. So what is this? मतलब ये really Telangana Chief Minister has moved Supreme Court for this reason, accusing the governor of deliberately withholding of assent. The governor has reportedly not signed 7 bills since September. September से तेलंगाना की गवर्नर ने साइन ही नहीं किया बिल. कर लो, रखे इन ट्रे में, नहीं करते साइन. So this is what the Times of India has said state of it. This is Pakistan, Indus Valley Civilization, and I think that is done. Okay. So I am Maza. I have given you a lot of interesting topics. I have given you a lot of interesting topics to discuss, debate, deliberate, read, है ना, इंटरनेशनल, नेशनल, सब तरह से. अब लेता हूँ आपके क्वेश्चन. अब क्वेश्चन लेता हूँ. जय हिंद तो ऊपर से हो गया है. हाँ. Yes, I am coming to Pune. Sorry, not Pune. I am coming to Patna tomorrow to Doon Defence Academy. They have invited me and they are arranging a seminar. Acha. Arpita says this time is perfect. Good morning, namaste, good morning. Nice t-shirt. Thank you very much. Thank you. Sir, 9 a.m. Yeah, 11 a.m. is good time for class. This time also good for, at that time, my English class live. So I missed English class every day because it is not safe after live. Virat. 9 a.m. या 11 a.m. चलो देखता हूँ.
जय हिंद साहब, जय हिंद उत्कर्ष, आकर्ष उपाध्याय. Aman Singh is, sir, that's the reason why in India women's work force is even lesser than compared to neighboring nations. Yes, there are many stereotypes about the girls, sir. Yes, Diksha, that is the issue. Virat Tyagi, diversity of India is everything. Yes, Anant Bhatta, A2 पढ़ाई, जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़, इसने सारा कवर कर दिया. Virat Tyagi, sir, why are so many fighter plane and choppers crashed? Everything is investigated. It can be due to many reasons. कोई आपसे पूछे, one can be pilot error. सबसे बड़ा issue can be pilot error. Second can be maintenance. Third can be weather. यही 3 issue होंगे और क्या होगा. Diksha says I've never heard of this issue. कोरिया का इशू, कोई बात नहीं, पता लग गया आपको. बहुत सीरियस इशू था ये कुछ साल पहले. The women were on the streets against Japan. Old ladies, they said we were used as in military brothels. So these women were used to be picked up and taken to as comfort women for the Japanese soldiers. By God, I've never heard of this kind of a thing in any war. मैथमेटिक्स पढ़ ले सर. आप कितने एनकाउंटर किए हो? मैंने कोई एनकाउंटर नहीं किया. आई एम नॉट अ पुलिस गाय. एनकाउंटर पुलिस वाले करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं. ठीक है. चिकन टिक्का मसाला इज नेशनल डिश ऑफ इंग्लैंड. यस. Ankita Singh, sir, can we say the EU and USA is sitting merrily and advertising that Russia is bad while not doing anything to stop it rather? Yes, to some extent, yes. They want Russia to be as weak as possible. कि ये मौका मिला है, रशिया को इतना वीक कर दो, इसकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री फोर्सेस को so many losses they should have that they will take years to recover. Satyendra Malik, I didn't see the project of the ISRO. साहिल राजपूत, सर इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का लिए कुछ अच्छी बातें बताएं इन हिंदी लैंग्वेज. साहिल, नर्सिंग असिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है. वो हॉस्पिटल में भी होते हैं, फील्ड एम्बुलेंस में भी होते हैं, फील्ड हॉस्पिटल में भी होते हैं. नर्सिंग असिस्टेंट का काम है इंजेक्शन देना, दवाई देना, पट्टी लगाना, कोई हाथ पैर टूट गया है, ये करना. और मैंने तो बहुत नर्सिंग असिस्टेंट देखे. इन्फेंट्री यूनिट में भी होते हैं 2 नर्सिंग असिस्टेंट, मैकेनाइज यूनिट सब में होते हैं. स्कूल में भी हमारे पास नर्सिंग असिस्टेंट थे एंड डॉक्टर थे. तो नर्सिंग असिस्टेंट एनए जिसको बोलते हैं, वो इंडियन आर्मी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है. इंपॉर्टेंट लोग होते हैं और बड़े क्वालिफाइड भी होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं. खुश. दीक्षा चौधरी, सर यू कैन रोस्ट मी, आई नेवर माइंड बिकॉज यू आर माई फेवरेट. दैट इज द वे. नहीं करूंगा, नो रोस्टिंग. दीक्षा को रोस्ट नहीं करेंगे. अमन सिंह, sir, if a governor is appointed with consultation top mode of a leader of LC, I got it. Yeah, yes, this is a good idea. If you are saying कि EC should be appointed like this, CBI, ED, ये सब के सब लीडर ऑपोजिशन और इनको लेना चाहिए. ऐसे गवर्नर्स का एक पूल बनना चाहिए अच्छे लोगों का, उसमें पिकअप करो. बट ये दिस इज टू आइडियलिस्टिक, होगा नहीं. प्रियांशु, सर इंडिया एग्जाम में 1 महीना है, अभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कि क्यों तुम्हें डाउट होता है? हमारी लड़कियां रितुल दुहन, उर्मी साहू, शाम बवी, जो पहले बैच एनडीए में गई थी, जिनको हमने BOAC कोर्स कराया था, उन्होंने 20 दिन के अंदर एनडीए क्रैक किया था और 450 नंबर है. ऑल इंडिया मेरिट 2 और 3. कितने दिन? 20-25 डेज. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आज कल में आई थी और 1 साल होने वाला है. एंड दे सेड कि नहीं इसी में. सो दे वर टोल्ड फिल फॉर्म्स. दे फिल्ड एंड दे क्लियर्ड. इंडियन एयरफोर्स मेरी जिंदगी है तो, वेरी गुड आइडिया. गौरंग मल्होत्रा, जापान अमेरिका रिलेशनशिप ऑल्सो बिटर पास, बट सर आई गेस जापान साउथ कोरिया would become good ally partners in future. Yeah, let's hope so. What is your pension view on pension? अच्छा, नरेश कसाना, I am a सिपाही. गुड नरेश, जय हिंद. अच्छी बात है, बच्चे क्लास 10 करो, अपना भविष्य संवारो. BOCC कोर्स करो, BOAC करो एंड कोशिश करो अफसर बनने की. फाइट तो मारो. Swapnil wants to know what is your view on new pension scheme. I have no views. I think it was economic reform and it will be financially not prudent to go back to old pension scheme. Yeah, it's become an election issue and people are using this to, but
मतलब जितना मैं समझता हूँ। Ankita Singh, these people are calling themselves servant of the citizen then shamelessly interfering in state's work. Yes, servant की spelling ठीक करो. Hi Aarti. रणवीर यादव, सर आई एम इन क्लास 11th, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी. पहले एसएसबी की मत सोचो रणवीर, पहले इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, अपने आप को ठीक करो. तुम लोग सब कोचिंग चाहिए, रिटर्न की कोचिंग, एसएसबी कोचिंग, ये नहीं देखते यार उनको ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए. मेरी वीडियो देखो ऑफिसर लाइक बिहेवियर पे, मेरी वीडियो देखो कम्युनिकेशन स्किल पे, करंट अफेयर्स. पहले अपने आप को तैयार करो कि आप सेलेक्ट होने लायक बनो. कोचिंग में मत भागो. थैंक यू. या वी मिस्ड वार्म अप लाइक अन अकेडमी, बट करेंगे शुरू. विराट, थैंक यू. प्रतीक, हाउ मेनी ऑपरेशंस आई हैव डन? हंड्रेड्स यार, हंड्रेड्स ऑपरेशंस. I have seen some of my friends having very less knowledge but still getting recommended. What does this signifies? The personality of the individual. That means they're well-rounded personality. जो आपको नजर नहीं आता है, आपको नजर नहीं आ रहा है. Knowledge is just one part. Academics is one part. More important is wholesome. आप क्या present करते हो आप. आकाश शर्मा, no political question. आयुष सिंह, why China is becoming broker for every big issue? Not broker, ये गलत वर्ड है. ब्रोकर होता है जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं. China is not a broker. China is emerging as a power which is able to negotiate conflicts. ये वर्ड यूज करो, ये वर्ड यूज करो. बिल्कुल 1 महीने में एनडीए हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है. साहिल, मेरा अभी नेक्स्ट मंथ एग्जाम है नर्सिंग असिस्टेंट का. प्रेयर मी सर. नो प्रेयर, काम से होगा पास, मेरे प्रेयर से नहीं होगा. ठीक है, काम से पास होगा. अगर पास पढ़ोगे तो पास हो जाओगे. Should reservation for women be increased from 14? There is no reservation of 14%. ये कहाँ का है प्रिया? कोई रिजर्वेशन नहीं है विमेन के लिए, बट होना चाहिए. 30% रिजर्वेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली. आई एम ऑफ दिस व्यू. 30% रिजर्वेशन मस्ट बी गिवन. थैंक यू साहिल, थैंक यू सुजाल. LBSNA अभी से लगा दिया आपने. लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी IS ID. सर इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करें? इंग्लिश स्पीकिंग के लिए BOCC कोर्स ज्वाइन करो. ये वाला तो क्लोज हो गया, नेक्स्ट वाला ज्वाइन कर सकते हो अप्रैल में. सर आई एम सिपाही, आई वांट टू बिकम इन्फेंट्री ऑफिसर. वेरी गुड, अच्छी बात है नरेश, ऑल द बेस्ट. मंजू मानसी, नमस्ते. विजय शर्मा, ओके. इंटरव्यूअर आस्क्ड मी द डिफरेंस बिटवीन रेजिमेंट एंड बटालियन एंड आई एम नॉट श्योर. यस, बोलो आई एम नॉट श्योर सर. ये कोई इसके लिए कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा इससे. बोलो सर आई एम फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड एंड आई डोंट नो. नेक्स्ट. Gaurang, this is a reservation is an issue which is very complex, very complex. Someday we can discuss this in a debate competition. सुजाल शुक्ला, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्लीज. इंग्लिश स्पीकिंग एंड मधुमती का है कॉन्फिडेंस, दोनों के लिए BOCC कोर्स. Arav Khandelwal, recently 2 army officers were appointed. Yes, one was already there, Brigadier Mishra. वो अरुणाचल में थे, उनको तो साइड स्टेप किया है. बट जनरल पाटंकर Parnaik was army commander Rajrif ke. He's been appointed governor. Now there are 3 army officers as governors in country. Lieutenant General Gurmeet Singh Uttarakhand mein, Arunachal and this. It's a good thing. Why not? Why don't? It's very good. Thank you, Sumit. Sir, your current affair class is awesome and very, very helpful. Eye knowledge is higher than mountain just because of you. Thank you very much. YMA rocks. रणवीर यादव, सर दून क्लास इज माई नियर माई रूम. तो इंग्लिश ठीक कर ले रणवीर, वही बात करूंगा कल आके भी. इंग्लिश ठीक कर लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कि तुम सेलेक्ट हो जाओ. सो प्लीज डू द नेक्स्ट BOCC कोर्स. बार कैप कर दिया है अब की बार. BOCC कोर्स अभी अगले महीने आएगा.
एनडी का पेपर कौन बनाता है मुझे नहीं पता भाई, कौन बनाता है पेपर लीक करवाना है मुझे नहीं पता, ना मैंने पूछा कभी कौन बनाता है पेपर। कोई भी बनाए, किसी को पैसे मिलते होंगे पेपर बनाने का, तुम्हारा काम है पेपर अपेयर करना, पढ़ के जाना, सिलेबस दिया हुआ उसी में से पूछेंगे, उसी में से पूछेंगे जो सिलेबस दिया हुआ है। एंड पिछले साल के PYQs कर लो, 10 साल के अच्छे से कर लोगे, फेल नहीं होते। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन आई एम शेयरिंग माय टेलीग्राम का लिंक, दोज ऑफ यू यू नो हु, अच्छा ये तो दूसरा आ गया, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो टेलीग्राम चैनल में रहो आप, यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैनल एंड मोर कम्युनिटी। सॉरी, वो यूट्यूब की वीडियो थी वो चलेगी, ये है टेलीग्राम चैनल। हिमांशु सिंह, BOCC लो, इट्स अ 3 months कोर्स, बट अभी आप लोगे अप्रैल में, अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट, अदरवाइज वी हैव कैप्ड इट। हमने वो ऐप से भी हटा दिया है कोर्स, बट स्टिल सम पीपल आर डेस्परेट। पेरेंट्स भी कॉल कर रहे हैं, रात को भी फोन आया किसी की मदर का कि सर प्लीज अगला महीना बहुत लेट हो जाएगा, मेरी बच्ची को आप एडजस्ट कर दो। रात को मेरे पास नहीं, मेरी टीम के पास, कैसे सर ये बार बार मदर के फोन आ गए। मैंने कहा चलो एडमिट कर लो, अगर ऐसे बोल रहे हैं तो। अभी हमने कम की है BOCC की कॉस्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ समर मंथ्स में मैक्सिमम बच्चे यूज करें इसको, समर मंथ्स में। ठीक है, बाद में वी विल सी, बाद में वी विल सी। चलो चलो, ऑल द बेस्ट, बहुत मजा आया, अच्छा था ना सेशन है। गिव अ थम्स अप एंड प्लीज कमेंट, यहाँ कमेंट ठीक है, ये कमेंट आप यूट्यूब में भी डालो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो दोस्तों फैमिली के साथ कि ये देखो ये तरीका करंट अफेयर्स पढ़ने का। ठीक है, चलो, तो 17 मार्च 2023 मे यू हैव अ ग्रेट डे, all the very best to you.